Hello students, I welcome you to today's session. So in the previous session students, we have done the poem, The Brook, okay, if you all remember, that was section A. And today we are going to pick up the same unit, unit 2, and we are going to be doing section B, that is Ranikhet's gift. Ranikhet here is the name of a hill station, okay. So we're going to be talking about a hill station and the author's experience. So the name of the author of this chapter is Rudrani Ghosh. So we are just going to be talking about her experience that she enjoyed when she went there to stay at Ranikhet. Okay. Now before students I start with the chapter reading, I would like to tell you all that we today's session consists of two videos, okay. That is video 1. This is your video 1 in which I'm going to be explaining you the chapter, and in video 2 I'll be covering your topic of grammar, that is adjectives, okay, because the back exercise of this chapter is based on your adjectives topic, okay. I hope it is all clear. So let us begin with the chapter reading now. So yes, let's go to the paragraph first. In the first paragraph, students, the author is going to be describing about the place. The dull light on frosted glass of the door heralded a new day. Now यहाँ पे मतलब कि बहुत dim light थी, and उस dim light में जो ग्लास है उस पर फ्रॉस्ट का मतलब होता है कि इट वॉज कवर्ड विद मिस्ट या धुंध से कवर्ड था वो ग्लास, ठीक है, उसका विंडो. एंड ग्लास ऑफ द डोर मतलब दरवाजे का जो डोर है वो उस पर धुंध जमी हुई थी और ऐसे लग रहा था हेरल्डेड, ओके. हेरल्डेड का मतलब होता है टू स्टार्ट और ब्रिंग समथिंग न्यू. सो नए दिन की शुरुआत हो रही थी. अ पीक आउटसाइड प्रेजेंटेड द पिक्चर ऑफ एन ओवरकास्ट स्काई. सो जब दरवाजे से उसने बाहर देखा तो उसको लगा, यस, उसको दिख रहा था कि जो सामने वाला पहाड़ है उस पर उसकी बहुत धुंधली सी पिक्चर उसे दिखाई दे रही थी. एंड धुंधली सी क्यों थी? बिकॉज उसके ग्लास के डोर पे धुंध जमी हुई थी. एंड जो आसमान था वो थोड़ा सा डार्क सा था, ठीक है, विद टॉल लूमिंग पाइन्स. टॉल लूमिंग का मतलब होता है यहाँ पे टॉल अप्रोचिंग, वेरी ह्यूज pine trees. If you go to hill station students, I'm sure you have visited many hill stations, तो वहाँ पे जो pine trees होती हैं वो बहुत लंबी होती हैं, okay, and they were standing motionless, awaiting the attack from above. Awaiting the attack from above means कि वो वेट कर रही थी कि कब हवा चलेगी और वो थोड़ा झूलना शुरू हो जाएंगी. A gust of wind, gust का यहाँ पे मतलब होता है ज़ोर से हवा आ जाने. Followed by a clap of thunder. So अचानक से बहुत ज़ोर से बिजली चमकी और एक तेज़ी से हवा आई. Unleashed मतलब उसने खोल दिया. Unleash का मतलब होता है खोल देना, to open the reins, and down it came with full ferocity. Ferocity का मतलब होता है with full speed. The monsoons had arrived in Ranikhet. सो ये सारे डिस्क्रिप्शन जो फर्स्ट पैराग्राफ में है, इट इज़ टॉकिंग अबाउट द प्लेस, कैसे शांत माहौल था और अचानक जब हवा चली, बिजली चमकने लग गई, तेज़ी से बारिश आ गई, तो कैसे रानीखेत का एनवायरनमेंट बदल गया. इट वॉज अ वंडरफुल साइट. द वाटर गशिंग एंड गर्गलिंग डाउन द स्लोप. Gushing and gurgling, both words, they are referring here to the sound and the movement of the water. Okay, जैसे तेज़ी से बारिश बहने लग गई तो जो पानी है, जो स्ट्रीम में या लेक में पानी था, वो बहुत ज़ोर से गश का मतलब होता है तेज़ी से बहने लगा. गर्गलिंग मतलब आवाज़ आने लगी उसमें से. The trees swaying and the leaves dancing in the mirth. So पेड़ जो तेज़ हवा चल रही थी, इसकी वजह से लग रहा था कि जैसे पेड़ हैं जो झूल रहे हैं, उनके पत्ते डांस कर रहे हैं. इन द मर्थ का यहाँ पे मीनिंग होता है खुशी से. इन द अकम्पैनियनमेंट, आई विल रिपीट द वर्ड अगेन, प्लीज प्रैक्टिस. आई हैव ब्रोकन इट इनटू पार्ट्स. अकम्पैनियनमेंट, okay.
of the now roaring winds and the orchestral din of pounding rain. ऑर्केस्ट्रल दिन का यहाँ पे मीनिंग है लाउड नॉइज. सो क्या हो रहा था, पेड़ जो पत्ते हैं किसके साथ साथ, कंपेनियनमेंट का मतलब होता है किसी के साथ, टू कंपनी समवन, ठीक है, किसी के साथ देना. किसकी वजह से झूम रहे थे, तेज हवा की वजह से झूम रहे थे. एंड ऑर्केस्ट्रल दिन मतलब एक सुरीली आवाज़ भी आ रही थी, किस चीज़ की, पाउंडिंग रेन. पाउंडिंग रेन का मतलब जो बारिश तेज़ी से हो रही थी, किस पे उनको आवाज़ आ रही थी, एट द टिन ऑफ द रूफ ऑफ आवर बंगलो. सो उनके जो रूफ थी वो टिन की थी, तो उनके बंगलो का जो रूफ है टिन से बना हुआ था, जिस पे उनको आवाज़ आ रही थी बारिश की. We had to dive inside for our woolens and socks. The noise grew louder and louder as white marbles of hail came dashing down the earth. So the author says कि अचानक से इतनी ठंड हो गई कि हमें अपनी वुलन सॉक्स निकालनी पड़ी. एंड जो नॉइज़ थी वो और ज़्यादा तेज़ हो गई. वाई? बिकॉज वाइट मार्बल्स ऑफ हेल, हेल का मतलब होता है स्नो बॉल्स, तो बहुत तेज़ी से स्नो पड़ने लग गई, अर्थ के ऊपर गिर रही है. कवरिंग द लॉन इन वाइट ग्रेवल. यहाँ पे स्टूडेंट्स ग्रेवल मीन्स द स्टोन, ओके, सो स्टोन ऑन द पाथ. सो द पाथ इज़ यूजुअली द स्टोन इज़ आइदर ब्रिक कलर होगा या ब्राउन कलर होगा, यू नो, स्टोन्स का. बट यहाँ पे इट इज़ टर्निंग इनटू वाइट बिकॉज ऑफ द स्नोफॉल. इट रेन्ड इनकेसेंटली. दिस वर्ड इज इनकेसेंटली. इनकेसेंटली का मतलब होता है नॉन स्टॉप, कॉन्टिन्यूस, फॉर कपल ऑफ आवर्स, एंड देन अ सडन काम डिसेंडेड ओवर द हिल्स. सो तेज़ी से बारिश होती रही कुछ घंटों के लिए, एंड अचानक से, डिसेंड का मतलब होता है डिक्रीज़ हो जाना, ओके. सो हिल्स की जो आवाज़ थी, मतलब जो आवाज़ इतनी ऊंची आवाज़ थी, वो अचानक से धीरे हो गई हिल्स में से. The distant mountains could no longer be seen, and neither was the winding pathway at the foot of our hillock visible. Hillock का मतलब यहाँ पे स्टूडेंट्स होता है hills, okay, small hills. So यहाँ पे अब वो कह रहे हैं कि जो distant mountains थे वो दिख नहीं रहे थे because snowfall हो रही थी, and ना ही तो उनको hills पे जाने का path दिख रहा था. The temperature had dropped considerably, and the clouds had come down फ्रॉम हेवनली अबॉर्ड. सो जो टेम्परेचर है वो वैसे ही ठंड हो चुकी थी, एंड जो बादल थे वो धीरे धीरे अपने हेवनली अबॉर्ड का मतलब होता है घर या रहने वाली जगह. सो क्लाउड्स जो हैं वो धीरे धीरे, जो ऊंचे आसमान में होते हैं, वो धीरे धीरे नीचे की तरफ आने लगे. ओके, सो यस, सो वी हैव completed your page 26. Now let's go over page 27. To visit us. So ऐसे लग रहा था जैसे बादल बहुत नीचे आ रहे हैं और उनको विजिट करने के लिए. I opened wide our main door, and to my great delight witnessed Lady Cloud floating into the house in her flowing gossamer gown. गॉज़मर का स्टूडेंट्स यहाँ पे मतलब होता है वेरी फाइन एंड वेरी डेलिकेट गाउन. कैरेसिंग आवर फेस, नेक एंड हैंड्स विद हर कूल मॉइस्ट टच. सो अचानक से जब ऑथर ने दरवाज़ा खोला, सो उसने क्या, शी वॉज सो हैप्पी. वाई? बिकॉज उसको दिख रहा था कि जो धीरे धीरे बादल हैं वो उनके घर के अंदर आ रहे हैं. एंड शी इज़ डिस्क्राइबिंग द क्लाउड्स एज अ लेडी. ओके, so now yes, this is a kind of a poetic device, okay students. So this is metaphor where you where we are. Yes students, so so I was talking about the description of the cloud. So yes, now Rudrani is trying to explain the lady cloud. ठीक है, यहाँ पे lady cloud, it is actually a device that is called, not metaphor, it is personification, क्योंकि वो क्लाउड को एक पर्सन की तरह डिस्क्राइब कर रही है. दैट शी वॉज वेयरिंग अ ब्यूटिफुल गाउन. यहाँ पे मतलब है द कलर ऑफ द क्लाउड्स, ठीक है, वाइट
कलर के थे एंड जब हवा आ रही थी तो उनके फेस को टच कर रही थी एंड द विंड वाज ऑल ब्लोइंग ऑल थ्रू देम, ठीक है। ग्रेजुअली द हेज का मतलब है धुंध, स्टार्टेड डिसइंटीग्रेटिंग। डिसइंटीग्रेटिंग मीन्स स्प्लिट करना, मतलब स्प्लिट बिखरनी शुरू हो गई। एंड द फर्स्ट ग्लिंट, ग्लिंट का मतलब होता है यहाँ पे झलक, ठीक है, वन लुक। द फर्स्ट ग्लिंट ऑफ सन रेज, शिमर्ड का मतलब होता है शाइन, ओवर द वेलवेटी स्मूथ ग्रीन माउंटेन साइड, while the dark clouds scurried away means भाग गए। सो धीरे धीरे जैसे सन की रेज आनी शुरू हो गई तो जो घास है माउंटेन का वो बहुत चमकने लग गया। यू सी स्टूडेंट्स, ये वी कैन एक्सपीरियंस दीज इज ऑल्सो, जब बारिश होती है। सो आफ्टर द रेन यू सी द इन द पार्क इट लुक्स सो फ्रेश एंड इट लुक्स सो ग्रीन। That is because the leaves and the plants get washed away with the rainwater. So same thing यहाँ पे the author is trying to describe. What a drastic change, मतलब अचानक से इतना बड़ा चेंज कैसे आ गया। What is the drastic change she's talking about? The drastic change here is the all of a sudden, you know, the environment that was so dark and so dull, so it all became bright. So that is the drastic change. Now a brilliant blue sky emerged in contrasting, startling white puffy clouds. So अचानक से blue sky हो गई and contrast का मतलब है opposite to dark clouds जो थे पहले, and अब fluffy clouds भी हो चुके थे वहाँ पे। Okay, startling means surprising. It was an artist's delight with all those shades of green, from light to the darkest, and flowers of every hue and color. Hue का मतलब होता है variety. So the author is saying yes, अचानक से ये एक आर्टिस्ट की पेंटिंग की तरह दिख रहा था एनवायरनमेंट, जो ग्रीन है, लाइट शेड्स हैं, डार्क शेड्स हैं, डिफरेंट वैरायटी कलर ऑफ फ्लावर्स वर ऑल्सो विजिबल ऑन हिली स्लोप्स बिटवीन द रॉकी क्रेविसेस। क्रेविसेस का मतलब होता है गैप्स इन द माउंटेन्स। एंड इन एवरी गार्डन there were splashes of red, crimson, yellow and orange. So these are the different colors of the flowers. The air was cool and crisp and the birds and the butterflies were out again. So धीरे धीरे butterflies and birds भी बाहर आ गई, हवा अभी भी तेज चल रही थी। We too went out for a daily walk. Amazingly there was to be found neither a puddle nor a muddy patch. सो रुद्रानी द ऑथर सेज कि हम भी शाम को निकल गए वॉक करने के लिए, एंड अमेजिंगली मतलब सरप्राइजिंगली हमें ना ही कोई कीचड़ दिख रहा था। पडल मीन्स कीचड़, मतलब वो जो बन जाता है गड्ढा, ठीक है। मडी पैच मीन्स ना कोई कीचड़ का वो था, सीन था। द सॉइल बीइंग रॉकी एंड सैंडी आइदर ड्राइड इजीली और वाटर मेड इट्स वे डाउन हिल। सो स्टूडेंट्स यू सी बिकॉज ऑफ द हिल स्लोप्स, सो द हिल्स आर ऑलवेज स्लैंटिंग। सो स्लैंटिंग हिल्स होने की वजह से पानी वहाँ पे रुका नहीं, कोई गड्ढे नहीं थे पानी से भरे हुए, यू नो। तो वहाँ पे क्या हुआ है, ऑल सो द ऑथर सेज आइदर पानी सूख जाता था या फिर डाउन द हिल इट यूज्ड टू फ्लो डाउन द हिल। नाउ द स्काई हैड क्लियर्ड, द होल माउंटेन रेंज वॉज इन व्यू, अ फुल 180-degree stretch of snow-clad mountains gleamed and glistened. Gleam का मतलब होता है shine, glisten का मतलब होता है glow कर रहे थे in the last rays of the sun. So अब जो जो mountains थे वो दूर से mountains छुप गए थे बादलों की वजह से, वो भी अब नज़र आ रहे थे, and it was shining and it was glowing in the sun rays. We stood mesmerized. Mesmerized का मतलब होता है कि attract हो जाना, एक जादू में खो जाना। So they were so much attracted as a reflection of the sun. Yeah. So as the reflection of the sun on the snow seemed to set the whole range ablaze. The orange glow began to spread and smeared itself. Smeared का मतलब होता है spread हो जाना, ठीक है, itself on the surrounding clouds. Slowly yet steadily,
Mingling का मतलब होता है mix होना. With the darkness as night gradually let down its curtain. So the author says the colors were so beautiful. अब ऑरेंज कलर आ रहा था. ऑरेंज कलर here signifies the coming of the evening, कि शाम का टाइम हो रहा था. एंड वहाँ पे सारे कलर्स बहुत रंग बिरंगे कलर्स थे जो मिक्स हो रहे थे. सो डार्क कलर्स भी आ रहे थे बिकॉज नाइट हो रही, शाम रात हो रही थी. एट द सेम टाइम शाम जा रही है और रात हो रही है. सो दैट्स अ वेरी वंडरफुल ब्यूटिफुल कलर्स ऑफ द एनवायरनमेंट. We hurried home to find there was a power cut. After a cup of steaming coffee in candlelight, we stepped out of the bungalow to check the power situation. And what a magnificent sight awaited us. So the author says कि वो if you remember, she was outside for a walk. So walk के बाद जब वो जैसे ही घर पहुँचे, they found there was a power cut. बिजली नहीं थी. And they had a cup of coffee over the candlelight. So candlelight जला के उन्होंने कॉफ़ी पी. एंड जैसे ही वो अपने बंगलों से फिर बाहर निकलते हैं देखने के लिए कि बिजली क्यों नहीं आई अभी तक, उनके सामने एक बहुत खूबसूरत नज़ारा था. इट वॉज द डार्केस्ट ऑफ डार्क नाइट्स. एंड यस, इट वॉज डार्क नाइट, एरी पिच ब्लैक, अ क्रीक ऑफ और अ क्रैकल मेड वन जम्प. सो एक हल्की सी आवाज़ उनको आई एंड वॉट दे कुड सी, बट वी लुक अप, और आवाज़ धीरे से आवाज़ आ रही थी बाय देयर फुटस्टेप्स. सो एंड ऑल ऑफ अ सडन वो उन्होंने ऊपर देखा. वी स्टूड ट्रांसफिक्स्ड. ट्रांसफिक्स्ड का मतलब होता है खो जाना. टू कीप स्टेयरिंग इन ऑ का मतलब सरप्राइज. लुकिंग एट द स्टार स्पैंगल्ड डार्क डोम अबव. सो लुकिंग एट द स्टार स्पैंगल्ड मीन्स कवर्ड विद स्टार्स. डार्क डूम का मतलब होता है डार्क स्काई above us. Never ever had we seen a million brightly lit stars at such a close quarters. So the author says हमने कभी भी ऐसा नज़ारा नहीं देखा था. We just had to stand on our toes to touch them. ऐसे लग रहा था कि जैसे स्टार्स नीचे आ गए हो एंड हमें सिर्फ टोज अपने उठाने हैं एंड वी कैन इवन टच द स्टार्स. In the celestial aura means the celestial here means sky filled with stars. Aura means the surrounding. And the eternal beauty. Eternal means yes, out of the world, जो हम imagine भी नहीं कर सकते. Beauty of the surrounding. The tumult of emotions. Tumult means confusion. So हम emotional confusion में थे कि ये actual में सच है या it is just a kind of a imaginary scene where they're standing. Only a soft thank you escaped my lips. So she was so much lost in the beauty of the place and the beauty of that particular scene of stars कि वो कहती है कि मैं और कुछ नहीं तो बस मेरे मुंह से थैंक यू निकल गया for showing me such a lovely scene. Okay students, so we end of the chapter reading here on page 27. So further you have your word meanings in the chapter that you have to note down in your copies. Okay, and after the word meanings on page 28 also you have word meanings. After this then you have the exercise, back exercise on the same page 28. you can solve this in your copies or on the books only. ठीक है, बुक्स में ही सॉल्व करना है आपने. क्वेश्चन आंसर्स, yes, I'm going to be sending you the picture. And there are exercises which are already solved. So आप ऐसे ही अपनी exercise अपनी copies में you will copy them in your books. Okay students, so this is the back exercise that you have to do. I'm on page 31 now. On page 30 कुछ भी नहीं है that you have to do. On page 30 there is one activity which I would like you to practice. It is very interesting. This is the pronunciation practice. You can see. Listen and say these words aloud. Okay, it is of q sound. जैसे banquet, bouquet, equipment, checkers. Okay, so you have to practice this and it will be very interesting. What you can do is while you're practicing this, open up, record your voice on the phones and then listen, and then listen to your own voice. So it will help you to improve your pronunciation. Do this, it will be a very interesting exercise for you.
Okay, and then on page 31 you have your back exercise. Again it is solved, so इसको आप अपनी books पे copy कर लेना. And then on page 32 again we have the back exercise, that is again solved. You just need to copy it in your copies. Okay, and yes, adjectives we are going to in the video 2 I'll be sharing with you the topic of adjectives. We'll be discussing about that. Okay students, so we end of the video 1 now. You may take a short break if you want to, and then join me again for the video 2 on the topic of adjectives.